Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 2371-7106 and 2342-1050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your hostess Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। Dhanyavad Vibhuti. Yes, we begin with the headlines. Key domestic stocks end almost flat with marginal gains. Sensex closes near 59,850 level. Nifty settles above 17,600 points. And oil prices steady as looming supply cuts balance concern about weakening global growth. मुख्य घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ लगभग सपाट हुए बंद। सेंसेक्स 59,850 स्तर के करीब बंद, जबकि निफ्टी 17,600 अंकों के ऊपर बंद। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें स्थिर। और सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। तो मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर आज मामूली बढ़त के साथ लगभग सपाट बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 14 अंकिया 0.2% बढ़कर 59,847 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25 अंकिया 0.14% बढ़कर 17,624 पर पहुंच गया। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स 0.4% पर, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% के ऊपर बंद हुआ। Key domestic stocks today ended almost flat with marginal gains amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 14 points or 0.2% to close at 59,847. Nifty at the National Stock Exchange advanced 25 points or 0.14% to settle at 17,624. In the broader market at the BSE, mid-cap and small-cap indices also ended with marginal gains. Mid-cap index closed at 0.4%, while small-cap index settled at 0.2% up. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 17 firms rose, while 13 fell. Among the biggest gainers include Tata Motors, surged 5.4%, Wipro was up by 1.8% and Power Grid added 1.7%. Among the losers include Bajaj Finance plunged 1.8%, IndusInd Bank shed 1.4%, Asian Paint fell 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 16 sectors logged gains while 4 witnessed losses. Realty Index surged 4.2%, while utilities and power advanced 1.6% each.
However, BankX slipped 0.5%, financial services declined 0.4%, and FMCG ended down by 0.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,013 companies rose, while those of 1,606 companies fell. A total of 162 shares remained unchanged. So, Shishir, what do you got to say about Sensex rising 14 points or 0.2% to close at 59,847? Time to think that we are stabilizing, or it's just the volatility is the name of the game in stocks? I think the second statement which you said about the volatility, that's a very critical. And this is of course, technically we are into the 6th day of rise in Sensex and Nifty. But this week is critical because of a number of factors. One, we will have data about the retail inflation for the month of March. Then we will have the industrial production data for the month of February. Then we will have the world economic outlook giving a sense of what kind of growth we are going to have. That is the data which we are expecting. Then there is a fund bank meeting which will also give some kind of direction to the overall global economy. So these are the 3-4 things which will guide the direction of the market. But at this moment, it seems that the market is okay. Just going on. It's not very up, not very down. Volatility is there, especially during the intraday, and more event specific. One particular event or one particular information is giving some kind of signal into the market, and that's why they are going into green zone or in the red zone. And we see Tata Motors going up, Wipro up, and Power Grid up by a small percent. If someone were to invest today, one should wait and watch, or is it dependent upon what kind of portfolio he wants, long-term, short-term? What would you say on that? So normally in the stock market, when the prices are low, it's the best time to buy the value stock or the what we can say as a blue chip stocks when the prices are low. And the names which you have mentioned, one of that particular company has gained second position in overall automobile market, and that is giving some kind of boost to that particular company. But what I will say that if you are really interested in going for investing in the stock market, just wait for any kind of fall and then make an entry. Otherwise, the problem is when you enter at a very high level, then you will be in trouble because you do not know at what level you should book the price, book the profit. Right. जी, थोड़ा कठिन है कि सबसे पहले बेंगलुरु से हमारे पास एक श्रोता हैं एनआर प्रसाद जी, अपना प्रश्न पूछिए. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. Just want to ask you, 8 of the top 10 valued firms added almost 82,169 crores in the mid-cap section. I just want to know from which sector it is the right time to invest. At this moment, considering the global health situation, pharma sector is again on the news, and it's a good time to go for any fresh investment in that particular sector. Financial sector slightly seems to be in trouble, especially because of the European and the American crisis. So the financial sector, my advice would be go for the wait and watch. And the other sector, which are basically the gas company or the oil companies, they are also attractive because of the new pricing mechanism. Some of the companies will lose money and some of the companies are going to gain. So my advice would be the number one, pharmaceutical industry. Number two, of course, FMCG is another area where you can go for. And the third one, at this moment, I believe infrastructure is the biggest thing which you should focus on because more and more states as well as the center is putting money into that sector. So these are three sectors which I believe they should go for investment. ये फ्यूचर के बारे में बात करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर हम वैश्विक जो संकेत मिल रहे हैं, अगर उस पर हम एक धारणा बनाए विचार करें, तो क्या लगता है आपको, जो शेयर बाजार पे जो भी हम देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वैश्विक संकेत आने वाले दिनों में कैसे हो सकते हैं? देखिए, अभी के समय में आपने देखा होगा कि दो तरह के हमने संकेत देखे. खासतौर पे अमेरिका ने फेडरल रिजर्व की बात करें, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी. हमारी मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, जबकि अमूमन यही हो रहा था कि फेडरल रिजर्व बढ़ा रहा था, हम भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही था कि महंगाई दर पर कैसे लगाम लगाएं. अमेरिका में थोड़े सिग्नल जो है वो मिक्स हैं, मिले जुले आ रहे हैं. एक तरफ रोजगार के दर बढ़ रहे हैं ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद भी, तो ये समझा जा रहा है कि कंपनियों ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया है. लेकिन अगर आप दो बैंक प्रमुख की जो कमेंट्री देखें,
उस कमेंट्री में साफ कहा गया है कि अभी भी मंदी का खतरा बना हुआ है, खासतौर पे यूरोप और कुछ देशों में। और मंदी की सुगबुगाहट जब तक रहेगी यूरोप या फिर अमेरिका में, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, वो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। और दूसरा ये है कि फेडरल रिजर्व अगर एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाए तो भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। Right, we are now joined by Hashmukh calling us from Mumbai. जी हशमुख जी, अपना सवाल पूछें जी। या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग जी जी। मेरा प्रश्न इसी को आगे लेके जाना है कि अगर अभी जो फेडरल रिजर्व आप बता रहे हो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके हिसाब से फेडरल रिजर्व क्या कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन वहां तो कंट्रोल में आ ही नहीं रही है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट स्टेप दे कैन टेक एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर मार्केट? थैंक यू। In my opinion, and considering the rate of inflation in US, Federal Reserve will go for another rate hike, most in all the probability. And if there is a rate hike, तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय शेयर बाजार से जो हमारे विदेशी निवेशक है वो पैसा निकालना बेहतर समझेंगे, क्योंकि उनके लिए अमेरिकी बॉन्ड में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित होगा अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं। तो अभी वहां का ब्याज दर जो बढ़ता है वो भारतीय शेयर बाजार के लिए खतरे की घंटी। और वैसे भी कहा जाता है कि ब्याज दर का जो नाता है शेयर बाजार से वो बहुत ही उल्टा है। ब्याज दर का बढ़ना भारतीय शेयर बाजार, चाहे जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उनके लिए बुरी खबर लेकर के आता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बुरी खबर आ सकती है। कहना अच्छा नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उससे बोलने में बुराई नहीं है। A little while ago, Shishir, you said कि मंदी का खतरा बना हुआ है in America. Technically speaking, मंदी है. It's a bit of a paradox. U.S. economy at the moment, on the one hand, you see inflation on the one hand, and yet employment is under control. What do you make of this? And technically speaking, there is a recession if you go by the results of the 2 quarters. See, recession is something, sometimes it is very difficult to define in the present situation. Normally, theoretically, we say that when there is a 2 quarters of GDP decline, it's a recession. Yes, consecutive. And yeah, as a 2 consecutive quarters. And India faced that one during 2021 because of the COVID period. Now, in various parts of the world, we are also seeing a 1 quarter of fall, then another quarter of rise, then the next quarter there is a fall. So how you read that? So that is the problem, that is the dilemma before the economists, that whether we should call this as a recession or not. We are seeing the similar kind of situation in Europe as well as in US. So that is giving some kind of concern. We are not seeing a clear trend whether it is the going down or going up, or whether it is a completely flat one kind of thing. So that is why it is difficult to define that whether there is a recession in US or not. But the reality is that there is some bit of recession. There is some bit of slowdown in various other countries. And if the global economy is slowed down, considering the oil prices, just take the oil prices. When the OPEC Plus decided to cut the oil prices, during that week, the oil prices went up by $5 a barrel. But after that, considering the apprehension of slowdown and recession in some parts of the world, the crude prices settled at $80, $81 or $82 a barrel. So that is showing that market is anticipating those things. And economists are in dilemma. For a common investor, the best thing is just to sit on the fence and wait for the real opportunity to enter into the market. और सर, तमाम प्रतिकूलताओं और विषमताओं के बावजूद हमने ये देखा कि रेपो रेट जो है केंद्रीय बैंक ने स्थिर रखा और लोगों को ब्याज दर में बड़ी सहूलतें हुई, वो कोई समस्या नहीं आई। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी के समय में एक बड़ी परेशानी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में, खासतौर पे जो हाउसिंग लोन की हम लोग बात करें, जो अब आपने देखा कि पिछले 1 साल में लगभग 2.5% ब्याज दर बढ़ा। और इसका सीधा असर है कि जिन्होंने भी लोन लिया, और खासतौर पे जिनका EBBLR है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट कहते हैं, जो कि डायरेक्टली रेपो से रिलेटेड है, तो वहां पर आपके लिए ब्याज दर बढ़ेगा ही। अब ऐसे समय में जब रियल एस्टेट सेक्टर आगे बढ़ रहा हो और वहां पर ब्याज दर बढ़ने का खतरा हो, लोगों के लिए कर्ज चुकाने के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बन जाए, तो
कहीं ना कहीं तो एक सोचना पड़ेगा कि क्या हमें अभी महंगाई को ज्यादा हमें प्राथमिकता देनी चाहिए या थोड़े समय के लिए हमें सोचना चाहिए कि क्या विकास को हम ध्यान दें। ये संतुलन बिठाना केंद्रीय बैंक के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और मौद्रिक नीति समिति ने इस समय जो किया उसके साथ साथ जो उन्होंने दूसरी पंक्ति कही, अगर आप रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब के बयान को याद करिए तो उनकी जो दूसरी पंक्ति थी वो साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि अगर महंगाई दर थोड़ी सी भी बढ़ी तो फिर हमारे लिए ये ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता बन सकता है। अब देखिए 2 दिन के बाद हमारे पास महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं 12 तारीख को, और जो बेमौसम की बरसात हुई है उसने खाने पीने के सामान के ऊपर असर डाला है। तो हमारे लिए ये एक आशंका तो अभी है कि चीजें शायद उतनी अच्छी ना रहे। बस उम्मीद करिए कि ब्याज दर में और बढ़ोतरी ना हो, जिससे कि जिन लोगों ने घर के लिए, गाड़ी के लिए या इवन शिक्षा के लिए कर्ज ले रखा हो उनके ऊपर उसका बोझ ना पड़े। Also let's pray for the rain gods to remain stable ताकि किसानों की फसल खराब ना हो और महंगाई ना बढ़े खाद्य पदार्थों की। Well friends, let me repeat the numbers once again. You may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23421050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. हाँ श्रोताओं, 23314444, 23717106 और 23421050 पे आप अवश्य फोन करें, और दिल्ली से बाहर अगर आप फोन कर रहे हैं तो 011 अवश्य डायल करें। और बात करते हैं रुपये की, तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 81 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के खिलाफ अमेरिकी मुद्रा की ताकत को इंगित करता है, लगभग सपाट था। ये दिन के कारोबार में 102.05 पर नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहा था। Shishir, when the logo for rupee was made, we were all very, very happy and rejoiced that our rupee has found a place in the international market there's a logo for it. Now we see that 18 countries have agreed to do trade in the rupee. My favorite question and my dream come true. Do we see rupee being a threat to the dollar in some time? Is that something? Are we moving in that direction? Is it happening? Is it going to happen? Add one more to 18. That's 19 countries now. They are ready to do that rupee-based trading. See, at this moment, I do not think that rupee is going to replace dollar. Or, of course, as an Indian, I will also pray for that the rupee is the dominant currency. But at this moment, I don't think, because even at this moment, many of the countries who are going for the rupee-based trade settlement, they are looking for some currency which has a dollar benchmarking, so that the trade could be settled according to the international currency movement. We should not forget that the 40% trades are still settled in dollar. So removing those 40% thing and bringing rupee into that's tough. Too far-fetched. But okay, hope is there, expectation is there, and I will certainly, as an Indian, will expect that there will be rupee as a dominant currency in the global trading. Great. Let's hope for the दिल्ली best. से हमारे एक श्रोता है रमेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। मार्केट मंत्रा टीम नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने अपनी बेटी के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उसमें 2 ऑप्शन होते हैं एजुकेशन लोन के लिए। एक तो ये कि वो बाद में मेरी बेटी उसको रिटर्न करे, सेकेंडली कि मैं उसको अभी इंस्टॉलमेंट में जमा करूं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब इंटरेस्ट रेट इतना वेरी हो रहा है तो क्या ये मेरे लिए ऑप्शन बेटर रहेगा कि मैं उसको अभी धीरे धीरे करके लौटाना शुरू करूं? रमेश जी, क्या आपका लोन 7.5 लाख रुपए से कम का है? नहीं सर, ज्यादा है। अच्छा, देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर आपके पास संसाधन है, अभी उपलब्ध है, तो पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय का जो बोझ है, और खासतौर पे बिटिया जो पढ़ाई कर रही हैं, जब नौकरी करेंगी तो शुरुआती दिनों में जरूरी नहीं है कि उनके पास इतने पैसे हों कि वो ईएमआई जो है उसको चुकाने के लिए उनको सहूलियत हो। तो बेहतर है कि अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध है, पार्ट पेमेंट कर दें, और अगर बिटिया की पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली है और आपके पास लोन प्री पेमेंट करने का है तो उसे देने में बुराई नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक फॉर्मूला हम लोग जो लोन में देखते हैं कि पहले जो 24 ईएमआईज होते हैं उसमें इंटरेस्ट आपका निकल चुका होता है, लेकिन
जब आप फ्लोटिंग पे होता है तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे ईएमआई का नंबर्स बढ़ता है तो आपके लिए परेशानी और बढ़ जाती है। तो मेरी सलाह हमेशा से यही रही है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, पार्ट प्रीपेमेंट करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। All right, I'm sure many would have benefited from that advice, Nikhil, Shishir. We now have Nikhil calling us all the way from Mumbai. जी निखिल जी, सवाल पूछें अपना। Very good evening to Market Mantra team. Good evening, जी। So very rightly he has commented, the honorable guest, that he says that the economists are not declaring it a recession, but there's a certain downturn in the economy. Now, if we do see a downturn, what would be a classic time frame for things to look upwards? That is my first question. The second part would be, in the Indian markets, which sectors do you see that even in this downturn or this year would be better performers out of the entire lot? Thanks very much. Okay. Going to the first question, it is slightly difficult because we are still we do not have any sign for end of Russia-Ukraine war. And there are other geopolitical tension also. So until unless the headwinds come down, it's difficult to say that when the things are going to be better or when there will be upside in the economy. But the good thing is that if we talk about the Indian economy has some advantage in comparison to the other. So Indian economy could perform well, and many of the data which we have seen, of course, they have lowered the projection for the current fiscal, which is 23-24. But if you talk about 24-25, all the agencies have upped their projection. This is number one. Number two, when you talk about the sector specific, my advice would be the infrastructure would be the best sector, because not just the central government but the state governments are putting more and more money into that. So that one sector which one should look for, and of course the FMCG is also the another sector where you can look at. इसी बीच दिल्ली से एक कॉलर हैं हरीश। हरीश जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी हरीश जी, अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी जी जी। शेयर का क्या फ्यूचर है? शैल वी स्टार्ट बाइंग? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। आईटी शेयर्स का मैडम फ्यूचर। आईटी सेक्टर के मामले में थोड़ी सी स्थिति अच्छी अभी नहीं है। उसकी वजह भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब हमारा आईटीएस मतलब या आईटी एक्सपोर्ट की हम लोग बात करें, या जो हम लोग बाहर के देशों से जहां से आईटी के ऑर्डर आते थे, वो अभी थोड़े से कम हुए हैं, एलोकेशन कम हुआ, और आपने देखा होगा कि कई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में ले ऑफ भी हुए हैं। तो इसलिए ऐसे समय में आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक साल के बाद जब ये नए नए चीजें आ रही हैं, आईटी के ऊपर खर्च बढ़ेगा और वहां पर हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए, ये समय शायद अभी उचित नहीं होगा। Shishir, do you see artificial intelligence as a threat to the IT industry? See, AI is also they need support from the IT industry. Of course, I mean, you can say that, of course, artificial intelligence is something which is not the natural but the artificial thing. But at the end of the day, they need support from the IT sector. The only thing is that how much support is there and what kind of various options they are going to use. That's a very critical. I mean, what thing. computers did to the employment, maybe AI will do to IT and reduce the numbers. Maybe. Let's see. We'll have to keep the fingers crossed. लालिमा जी, इसी बीच हमारे साथ एक श्रोता हैं ग्वालियर से मोहन कुमार। मोहन कुमार जी, अपना प्रश्न पूछें। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। एक्सपर्ट सर ने अभी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा रहेगा, तो मेरा सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्ले करने के लिए सीमेंट स्टॉक में आपकी मार्गदर्शन कीजिए, आपकी राय दीजिए। थैंक यू। देखिए, सीमेंट में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रियल एस्टेट का भी रोल होता है, और अभी के समय में जो थोड़े बहुत ब्याज दर को लेकर के चिंता थी, उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पे असर पड़ा, लेकिन वो एक हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश केंद्र और राज्य दोनों कर रहे हैं, निजी कंपनियों ने भी कुछ कुछ हद तक निवेश करना शुरू कर दिया है। तो सीमेंट का मुझे लगता है कि आउटलुक बेटर है, और कम से कम अगर मैं 6 महीने से लेकर के साल भर की बात करूं तो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए।
इसी बीच एशियाई बाजार की बात करें तो एशियाई बाजार आज मिले जुले कारोबार के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.9% चढ़ा, जबकि जापान के निक्केई में 0.4% की बढ़त रही। हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% मजबूत हुआ, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% गिर गया। यूरोपीय बाजार दिन के कारोबार में सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 1.1% बढ़ा, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.5% और फ्रांस का कैक 0.1% चढ़ा। A look at the oil prices now. Well, oil prices today steadied today after rising for 3 straight weeks as looming supply cuts from OPEC Plus producers balanced concern about weakening global growth that may dampen fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at around $85.20 per barrel, while West Texas Intermediate WTI crude price was at $80.81 per barrel when reports last came in. This is all economic jargon. How do you analyze this? I think okay, before that we have a caller, right. Jitendra is, okay, nahi the shayad. Ji. So how do you analyze this report with a lot of economic jargon in between? Ji. That's you are talking about the crude thing, I believe. Yeah. So the crude prices, see what is happening at this moment. There are two developments. One is when OPEC Plus said that they are going to cut down the prices. At the same time, we are not seeing any recovery, much of the recovery. So when there is a not recovery, then there will be lesser demand for the oil. So despite the production cut, we are not going to see much of the price rise which we were apprehending last week. So last week we did see some kind of price upward movement. This week you are saying it's nearly stable, and I think for the next 15 to 20 days the things will be at the same level, not much change into that. इसी बीच मुंबई से हमारी श्रोता हैं स्वाति जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आई वांट टू नो वेदर इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और शुड वी वेट अ लिटिल मोर? I think it's a very good time because giving all the, if you talk about the post office schemes, senior citizen schemes, not just the rates have been hiked, but also the limit have been raised. So you can go into that. At the same time, various banks are also offering very attractive rate on the senior citizen. If you compare with the current fixed deposit, there is a gap of 50 basis point. But my advice would be the post office's schemes are much better. Post office scheme is much better. One, there is a higher limit. Number two, the interest rate is high. So it's a good time to go for that. Right, we're talking about India as the 5th largest economy in the world. Here's great news, another great news. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that the number of startups in India has grown 300 times over the last 9 years. Speaking at the National Innovation Awards at Rashtrapati Bhavan today, Dr. Singh said, as compared to 350 startups in 2014, now the country has more than 90,000 startups with over 100 unicorns. He said biotech startups also went up from around 50 to nearly 6,000 during the period. He attributed the growth to Centre's special startup scheme and the opening of the space and biotech sectors to private participation. The awards were presented in different categories and two of the recipients were Padma Shri awardees for their innovations. और सोना और चांदी की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के अनुबंध के लिए सोने की कीमतों में 103 रुपये की गिरावट आई है। सोना अंतिम समाचार मिलने तक 60,408 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी मई अनुबंधों के लिए 370 रुपये की तेजी के साथ 74,940 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $2,026 और 40 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि दिन के कारोबार में चांदी में $25 9 सेंट प्रति औंस की तेजी दर्ज की गई। Well, on that note, thank you so much, Shishir Sinha ji, for being with us as our financial expert for this program. We now close our show, but we have a reminder of the headlines, of course. Key domestic stocks end almost flat with marginal gains. Sensex closes near 59,850 level. Nifty settles above 17,600 points. Oil prices
steady as looming supply cuts balance concern about weakening global growth. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Vibhuti Mishra ji, signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.